Hello and hi everyone. Welcome back to my channel and I welcome you all. Good afternoon to every one of you. Thank you so much for joining in. This is a session on ICSE History Class 8 and this is the very first chapter that we are going to discuss here. Okay. Sorry. So I welcome you all. So this is Simran Priya, as you know my name. Now what is our topic for today's discussion? We are going to discuss chapter 1 and this is part A of this chapter, a period of transition from the Ratna Sagar publication we are discussing on. Now this is the curriculum that we are following is ICSE curriculum. Okay. Moving on, what is our today discussion? आज हम लोग किस चीज पे डिस्कस करेंगे? Now I would like to say hi to SR brothers, Navya Raj, Chandana Kumar Singh, good afternoon. Vidita Tiwari, good afternoon. Arpana, Avnesha Mishra, good afternoon, everyone. Thank you so much for joining in. Now, the contents that the index that we will be discussing today is first the introduction to this chapter, the transition. ये जो period of transition हम लोग कर रहे हैं उसका introduction करेंगे. Then we will discuss the major sources जिससे हमें इस history के बारे में पता चलता है. We are going to discuss the sources through which we will know about we knew about this history of this period. I would like to say good afternoon to Shubhangi Mishra. Thank you so much for joining in. Now moving on, we will discuss Europe in general. हम लोग यूरोप में ये देखेंगे कि modern period आ चुका है and we will discuss Renaissance and Reformation in today's session. This is chapter 1 of your book. Chapter 1 है ये और इसका ये part A है. I will be bringing you this chapter in parts so that you have a better understanding and a clearer concept. Now, before starting my lesson, let me introduce myself first as who am I? My name is Simran Priya. I have done my graduation and my masters from Delhi University and this is a channel which is an extension of my non-profit organization that's an NGO where I work with underprivileged students. Moving on, I'm also a teacher in a ICSE school that is Mount Carmel. Okay, moving on, let's begin with our session that is a period of transition. Are you guys excited? Write in the comment box that yes, you are excited and you are ready to learn about this chapter. Now we have many learners joining in, so I would like to say call all your friends, all your classmates, previous आप लोग जो लोग भी आप जिसको भी जानते हो they are in 8th standard. This is going to be a very helpful session for all of you. Now moving on, the very first topic is introduction to this chapter. ठीक है, चैप्टर क्या था? A period of transition. Transition, what is transition? Transition is a phase when there is a change from one thing to another. Like अगर medieval से modern में हो रहा है change, so what we will see there is बीच का जो part है वो transition है. जैसे I usually say, yes, thank you so much, Akhilesh Kumar, Vinita Tiwari, Chandana Kumar Singh, thank you so much. I'm really excited too. Now, transition देखिए पहले क्या है. Transition, जैसे कि अभी आप लोग हो 8th standard में. You are in which grade? You are in 8th standard. Now, after your final exam, you will move on to 9th standard. आप लोग किस क्लास में जाओगे? 9th standard में जाओगे. तो ये एक क्या होगा? एक मेजर चेंज होगा 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आना. सो इस चेंज में ये जो चेंज का एक दौर है बीच में जहां आप ना पूरी तरीके से 8th स्टैंडर्ड के रहते हो ना पूरी तरीके से आप 9th स्टैंडर्ड के बनते हो. दैट इज द फाइनल एग्जाम और द पीरियड आफ्टर द फाइनल एग्जाम, दैट इज नोन एज अ ट्रांजिटरी फेज. ओके, जहां पर चेंज हो रहा है. Okay, yes, I will be coming live for also 9 and 10 standard as well, but do not worry. Now, this is a session on 8th standard. I will soon be bringing all the sessions on various subjects for all the sections. Thank you so much, Akhilesh, for asking this question. Now, moving on. History. Now,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दैट इज इतिहास। इतिहास क्या दिखाता है, इतिहास शोज चेंजिंग पैटर्न इन अ सोसाइटी, कि हाउ द पॉलिटिकल, द सोशल, द पॉलिटिकल, द सोशल, द कल्चरल एंड द economical aspect of a society changes with time, and that has been recorded and that becomes our history. ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती है, हिस्ट्री बन जाती है. Now historians have divided history into three periods and you know this very clearly कि historians ने इतिहास को कितने पीरियड में डिवाइड किया है, तीन पीरियड में. पहला is the ancient history, second is the medieval history and the third is the modern history. Okay, ये modern history में modern history. Okay, now moving on, change from the medieval to the modern history did not happen overnight. अब ये जो बदलाव का प्रतिक्रिया है, ये जो बदलाव जब होता है, जैसे कि एंशियंट से मॉडर्न में आया था, एंशियंट से मीडिएवल में जरूर एक बार आया होगा, है ना, और इसके बाद मीडिएवल से मॉडर्न, ये जो हमेशा ये बदलाव होता है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता ओवरनाइट हो जाता है. दैट इज, आज हम लोग सोए तो आज हम लोग मीडिएवल में सोए थे, कल मैम हम लोग उठे तो मॉडर्न एरा में उठ गए. नहीं, दिस विल नेवर कम, दिस विल नेवर हैपन ओवरनाइट. ओके, सो अगर ये एक झटके में नहीं होता है, दैट मीन्स इन अ सिंपलर वर्ड, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, अगर ये एक झटके में नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. नाउ अखिलेश कुमार, फॉर द 9th स्टैंडर्ड, अगर आप 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री करना चाहते हो, ज्योग्राफी या वेरियस अदर सब्जेक्ट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, यू नीड टू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू नीड टू स्टे कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म. और जैसे ही एवरी नाइट आई अपडेट द नेक्स्ट सेशन, सो जैसे ही आपको अपडेट आएगा, आपके यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट मैम इज गोइंग टू कम लाइव at this time and you have this much left. Okay, so please stay connected and then you can know कि क्या कब मैं लाइव आऊंगी आपके सिलेबस के साथ. ओके, नाउ ये अब क्या हम लोग कर रहे थे, चेंज, कोई भी बदलाव झटके से नहीं आता है, दैट इज नो चेंजेस कम्स ओवरनाइट, सो इट मींस दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. Okay, that takes to place over a period of time. Gradual process है, धीरे धीरे होता है और उसे एक टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में. Okay, now it did not begin at the same time and in all the places of the world. पहला बात झटके से नहीं आता है, दूसरा बात ये एक स्लो प्रोसेस है, तीसरी बात कि ऐसा नहीं था कि विश्व में सारी जगह बदलाव एक साथ ही आया एक जैसा. नहीं, कुछ बदलाव हमारे यहाँ पहले आया, कुछ बदलाव यूरोप में पहले आया, कुछ बदलाव कहीं पर पहले आया, कहीं बाद आया. जैसे कि you will see that the modern era, that the beginning of the modern era in Europe is far before it began in India. Okay, let's see this. Now 18th century, 18वीं सदी marks the starting point of the modern period in India. 18th century does what? सब आप लोगों ने चेंजेस समझ गए. हिस्ट्री का मतलब ही है चेंजिंग पैटर्न इन अ सोसाइटी. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट चेंज डज नॉट कम ओवरनाइट. नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक टाइम एंड इट डज नॉट कम टू होल वर्ल्ड एट वन पेस, सो इसलिए टाइम लेता है. अंडरस्टूड. अब इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है, इट केम इन द 18th century with the coming of the British. So इंडिया में मॉडर्न पीरियड कब आता है, 18th century में. At this time British became the master of India. Now इस दौर में 18वीं सदी में क्या होता है, मुगल साम्राज्य, the Mughal Empire came to a complete end. ओके, मुगल अंपायर का क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट एंड ऑफ द मुगल अंपायर. और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड इंडिया में बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है. दे हैव बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया.
Understood? Now, they brought many changes in different fields of life. And these Britishers, they brought many changes in India. Like changes in the society, जैसे कि उन्होंने सती बंद करने में हमें मदद की. Also economic changes, जैसे कि उन्होंने हमें forcefully कुछ cash crops उगाने के लिए बोला. They asked us to grow certain cash crops like indigos in order to boost up their economy, not boost us our economy. ठीक है. और भी बहुत सारे changes, पॉलिटी में चेंज आई कि ब्रिटिशर्स अब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, इंडियंस नहीं संभाल रहे हैं. सो हमें बहुत ज्यादा बदलाव दिखता है इंडिया इस टाइम पर इंडिया के वेरियस aspects में. Okay, now these changes were so radical that they constituted a new period. Now ये सारी जो changes थे वो इतने drastic और इतने major changes थे. Major changes थे कि इन्होंने क्या किया, इसने एक नया period का ही शुरुआत कर दिया. Now these changes were so drastic and so major that इसको हम लोग medieval में नहीं रख पाए. medieval दौर एक सेम तरीके का दौर है. अब इस टाइम पर ऐसा बदलाव आया, जैसे कि रेलवेज आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया. तो ये सब ऐसा बदलाव है जिसको एक हम लोगों को अलग पीरियड का नाम ही देना पड़ा. Understood? Now the modern period in Europe began in the 16th century. अब आपने अभी क्या जाना कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड बिगैन इन द 18th century, बट इन यूरोप में 2 century पहले, दैट इज इट केम 200. Yes, Chandana Kumar Singh, very good. It came in the 16th century in Europe. Understood? So 16th century में ये क्या होता है? Chandan Kumar Singh, I'm really sorry, I mispronounced your word. So it is Chandan Kumar Singh. I'm really sorry for that. Now, modern Europe में कब आता है? 16th century. हिस्ट्री पढ़ने का सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, आप लोगों ने जान लिया कि इस टाइम पर किस तरीके का बदलाव आ रहा है. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके सोर्सेस को जानना, कि हमारी हिस्ट्री किस सोर्सेस को कंसल्ट करके लिखी गई है, कि हमारी हिस्ट्री किस सोर्सेस को कंसल्ट करके लिखी गई है. As there is abundance of source material for the modern period in India. We find abundance, बहुत ज्यादा सोर्स मटेरियल हमें इंडिया में मिलते हैं मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड. ओके, अब ये सोर्सेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, पहला क्या है प्राइमरी सोर्स और दूसरा क्या है सेकेंडरी सोर्स. अब हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे कि प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सोर्स. ओके, लेट्स डू फर्स्ट द प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी, द वर्ड itself suggests that this comprises the original documents. Original documents क्या मतलब क्या, जो उस शताब्दी में ओरिजिनली लिखी गई थी, जो उस दौर में यूज किया गया था. They comprises the original documents like the letters, the government reports, the autobiographies, the newsreels, the newspapers, speeches, sculptures, paintings. These all things जो उस टाइम के पेंटिंग्स है, न्यूज़पेपर है, ये सारा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राइमरी सोर्स. अंडरस्टूड. नाउ इसी में हमें इसी प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ कागजी चीजें नहीं आएंगी. नॉट ओनली द थिंग्स दैट इज ऑन द पेपर, बट वी also find archaeological remains. Archaeological remains भी हमें यहाँ पर मिलते हैं. Yes, Vinita Tiwari, very good. We have 2 kinds of sources, the primary and the secondary. So primary में हमें क्या मिलेगा, original documents मिलेंगे, और ये original documents के साथ हमें archaeological remains जिसे खोद के निकाला गया है या फिर जो उस टाइम से अभी तक वैसा ही बना हुआ है, the buildings, the stone shields, ये सब क्या बने, archaeological remains. The monuments and the artifacts. Artifacts मतलब जैसे कि pottery हो गया, okay, seals हो गए, coins हो गए, beads हो गए,
ये सारी चीज ज्वेलरीज हो गई, ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफैक्ट्स हैं। Understood? Now these things, these artifacts, these letters, biographies, they are preserved in archives and in museums. उन्हें कहाँ प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें आर्काइव्स में प्रिजर्व किया जाता है और म्यूजियम्स में प्रिजर्व किया जाता है। यू आर गेटिंग दिस? ओके। What is an archive? अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, what is an archive? आर्काइव इज अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल, आर्काइव क्या है, आर्काइव एक जगह है, इट इज अ प्लेस जहां पर हिस्टोरिकल मटेरियल्स या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ओके, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जहां पर रखे जाते हैं, दैट इज आर्काइव। ओके, moving ahead, now comes the secondary source. Second is the secondary source. Primary एक source हो गया, दूसरा है हमारा secondary source. Secondary source क्या होता है, जो primary source को पढ़कर, जो प्राइमरी सोर्स को क्या कर स्टडी कर हिस्टोरियंस क्या करते हैं, दे स्टडी द प्राइमरी सोर्स एंड दे इंटरप्रेट द प्राइमरी सोर्स। Good afternoon, Anshul Kumari. Thank you so much for joining in. Bring all your friends, call all your classmates. That this is taking a ma'am is taking. I'm sorry, I'm calling myself ma'am. Miss, so ma'am is taking an online session, so they must all join in and they must listen to this. अगर आप लोगों को इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है for your exam, for your upcoming exam, this is an excellent way to do this because this यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको विजुअल प्रेजेंटेशन मिल रहा है। दैट इज द कोर ऑफ अ यूट्यूब सेशन दैट आई एम conducting. I have prepared a presentation for you and this will help you to understand the chapter very beautifully. Good morning, this is good morning. Yeah, good morning नहीं है बच्चा, good afternoon है। Good afternoon Lavanya, thank you so much बच्चा for joining in. ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्स। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स को और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं। They study and interpret the primary sources and this forms the secondary source. ओके, जैसे कि उस टाइम के रिपोर्ट्स को उन्होंने पढ़कर अभी कुछ, उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स बनाए या उनका खुद का रिव्यूज उन्होंने लिखा, जैसे कि हो सकता है वो आईनी अखबारी पर, बाबरनामा पर वो रिव्यू लिखे अपनी। द आर्टिकल्स दैट वी गेट बाय स्टडीइंग हिस्ट्री एंड द बुक्स बाय द हिस्टोरियंस, दीज फॉर्म्स द सेकेंडरी सोर्सेस। मूविंग अहेड, नाउ कम्स रेनेसांस। ठीक है, अब हमें क्या दिखता है, अब हमें क्या दिखता है यूरोप में। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि यूरोप में व्हाट हैपेंड, यूरोप में क्या हो रहा है इस टाइम पे। द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर इंटरैक्शंस अमंग द कंट्रीज इन दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हो रहा है, बहुत सारे इंटरैक्शंस हो रहे हैं विद द कंट्रीज ऑफ द यूरोप। क्या कर रही है, इंटरैक्शंस कर रही है, किससे कर रही है, ऑल द कंट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे कंट्रीज से इंटरैक्शन कर रही है फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब क्योंकि यूरोप सबसे इंटरैक्शन कर रही है, सो यूरोप में अगर कोई बदलाव आएगा, द चेंज दैट विल हैपन इन यूरोप विल आल्सो अफेक्ट other nation, will also have an influence on other effect or influence on other nation. Like for example, यूरोप जब, जैसे कि यहाँ पर जो चेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पर रेलवेज आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, सो इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में रेलवेज का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और एक चेंज लेकर आते हैं। ओके, नाउ थैंक यू Thank you so much, Shraddha Ghosh, for joining in. Moving on, we will be discussing Renaissance. Now, Renaissance, very interesting topic. Renaissance क्या है? Renaissance का जो शब्द है, इसका literal meaning होता है rebirth. Renaissance जो शब्द है, उसका literal meaning क्या होता है? To reborn or to take a rebirth.
ओके इस टाइम पे क्या हो रहा था कि कुछ लोगों ने पुरानी चीजों पे सवाल उठाए और उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं. Okay, that is the meaning of interaction. Now moving on, Renaissance was a cultural movement. ये एक पॉलिटिकल रेनेसांस वॉज अ कल्चरल मूवमेंट. ये क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था जहां पर क्या चीजें बहुत बढ़ती हैं, जहां पर आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफीज, ये सारी चीजें बढ़ती हैं. कल्चर का पार्ट, आर्ट, आर्किटेक्चर, okay, philosophies and sciences, these things develop here, so that forms the cultural movement. Now Renaissance spanned from 14th century 14वीं शताब्दी और से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में 14th century to 17th century. This was this period. Now moving and culture of the ancient Greece and Rome. अभी मैंने आपको बताया ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों इसे रीबर्थ कहा जाता है. Why रीबर्थ है ना रेनेसांस का मतलब, क्यों आखिर ये शब्द दिया गया? इट वॉज बिकॉज, क्योंकि इनका एम था कि वो क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, फिर से चेंज, पूरा बदलाव करेंगे, फिर से एक नया जन्म देंगे. किसको? द क्लासिकल ग्लोरी, उस टाइम की पुरानी ग्लोरी, लर्निंग, कल्चर को वो क्या देंगे, रीबर्थ देंगे, ऑफ ग्रीस एंड रोम. सो दैट्स व्हाट द रेनेसांस एम्ड एट. Okay, what the Renaissance aimed at. Okay, now while reviving the classical glory, learning and architecture, the culture, they focused on which subjects? So they focused on art, architecture, literature, philosophy and sciences. These were their major topic of interest. उन्होंने इस टाइम पर क्या डेवलप? Anyone? Go ahead and reply to this. What do we mean by rational thinking? Yes, I am waiting anxiously. I am waiting patiently for your reply. So, I would be getting the reply very soon and I will be calling out the names of the students who will reply to this करेक्टली. जिसको रैशनलिस्ट का मतलब पता है या रैशनल का मतलब पता है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो मुझे रिप्लाई करेगा एंड आई विल बी कॉलिंग आउट योर नेम. सो रिप्लाई दिस एज क्विकली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्दी आप कर सकते हो करो बच्चा. यस, I would wait for one more minute. So for a few seconds I will wait, and if there is no reply, at least write that you do not know the meaning of rationalist. I will be telling you the meaning of rationalist. Now, before the people replies, let us go forward and I will be calling out the names अगर आपने सही reply करा है तो. ना ये रेनेसांस के जो थिंकर्स थे, जो इस टाइम को, इस दौर को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग रैशनल थिंकर्स थे एंड दे वर कॉल्ड एज रैशनलिस्ट. रैशनल मतलब क्या होता है बच्चा? रैशनल मतलब होता है जब आप तर्क देते हो, व्हेन यू थिंक विद रीजंस. When you think with reasons, जब आप किसी चीज में तर्क देते हो और तर्क वाले डिबेट्स करते हो, rather than having a belief, belief नहीं है ये क्या है? When you reason out something, that is a rationalist. Yes, Renaissance thinkers were known as rationalists. Yes, I know this. Renaissance thinkers were known as rationalists. But what is the meaning of rational or rationalist? So the meaning of rationalist is yes, Vinita Tiwari, of course, Chandan Kumar Singh, a person who is taking decision with logical thinking and not from emotion. Absolutely. A person,
very good, Chandan, that a person who does what, जो reason करता है, जो logical thinking अपना लगाता है, rather than just following the belief or just following. A person who base their opinion and action on reason and knowledge. Anupriya Raj, thank you so much. Absolutely correct. Now these are my students, beautiful, bright students you are. To find reason why to do so. Sujit Gupta, very good. I am so proud of you. You guys make me so proud. Now they asked people. अब ये rationalist लोग जो Renaissance के thinker थे, उन्होंने लोगों को क्या बोला? They asked people not to blindly accept whatever the church told them. उन्होंने लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को blindly accept नहीं करना है कि आपको church क्या बोलता है. You shouldn't accept whatever the church says, right? Moving on, they question belief founded on blind faith and superstitions. और उन्होंने किस चीज पे? Anupriya Raj, oh, I'm so glad that you said you are in 7th standard and you are answering my 8th standard question. I'm so proud of you, good bacha. You are really a bright, intelligent child. Okay, now if you want to stay with me, you are more than welcome to stay in my class. Okay, now they ask people not to blindly, अंधा विश्वास नहीं करना है, not to accept whatever the church has said, कि church कुछ भी बोलता है उसे हमें नहीं विश्वास कर लेना है. They questioned beliefs founded on blind faith and superstition. उन्होंने सारी चीजों को belief को question किया. I would say good afternoon to Shreya Kriti. Thank you so much for joining in. We are discussing Renaissance. I hope you are interested in this topic and thank you so much for coming to my live session. Now moving on, उन्होंने और क्या किया? The Renaissance people who were thinking with logics, who were giving reasons to their thinking, who were reasoning out. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कहता है कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो उसके बाद आप उसे पहले पार कर लोगे तो वो अशुभ हो जाएगा, या फिर कोई कहता है कि हमें झाड़ू को सीधा नहीं रखना चाहिए या लटका के नहीं रखना चाहिए, और वेरियस अदर सुपरस्टिशन. देयर इज आल्सो सम सुपरस्टिशन जैसे कि पीरियड्स को स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि पीरियड्स के टाइम आप अनप्योर हो, आप किचन में नहीं जा सकते, आप अचार को नहीं छू सकते एंड ऑल ऑफ दैट. सो कैन यू से मी कि क्या इन सारी चीजों में कोई तर्क है? क्या बिल्ली कुत्ता रास्ता काटने से क्या सच में कुछ अशुभ हो जाएगा? Can we answer this with reason? No, we are just believing on stuff. जो हमें किसने कहा है, जो हमें हमारे बड़ों ने कह दिया कि बच्चा ये मत करो, ये मत वो करो, हम लोगों ने सिर्फ मान लिया. But we shouldn't be like this. We must ask why. If periods are impure, why? अचार को छूने से क्या होगा? लोग कहते हैं अचार छूने से खराब हो जाएगा. I am telling you कि कैसे, just do it once. एक बार करके देखो, थोड़ा सा ही अचार को छू के देखो, क्या वो खराब होता है? क्या आपकी कुछ भी लॉजिक है कि your body is bleeding and you are touching a pickle and that will go bad? I do not find any reason to believe on these stigmas. Okay, so these were also the people who were giving logical thinkings, who were giving answers, who were reasoning out. Now they did not believe on faith and superstition. अंधविश्वास पे वो लोग नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग question करेंगे. Now to judge and accept things, they were also telling कि what these thinkers were asking people to do, that you must always judge and then accept anything. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. अंडरस्टूड? पहले इस्तेमाल करो, दैट मीन्स पहले जज करो और फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करो इन द लाइट ऑफ अ रीजन. जब आपको उस चीज से आप बहुत वो हो जाते हो कि यस, दिस इज द एक्चुअल करेक्ट रीजन आई हैव गॉट. So that is the thing. Okay, now people began to observe, experiment and use their reasoning to arrive at a conclusion. See the beautiful change that is happening here. यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग observe कर रहे हैं, they are doing their experiments and then use
use their reasoning, फिर वो लोग अपने तर्क वाले पावर को यूज करके they are arriving to our conclusion. I'm so glad that I have so many people from 7th standard joining in. I would like to say hi to Adya and Astha and Kashish Jain. Thank you so much for joining in. We are discussing chapter 1 of class 8's history. Now this is the Renaissance topic. Okay, so यहाँ के लोग observe कर रहे थे, experiment कर रहे थे, and then they were using their reasons to come to a conclusion. किसी भी चीज पे के conclusion पे आने के लिए वो इतना process follow कर रहे हैं, ठीक है? Now human became the center of study during this period. अब इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में अभी जो हम लोग बात करते हैं ना बॉडी पॉजिटिविटी की, हम लोग बात करते हैं कि वी मस्ट इम्ब्रेस आवर बॉडी, वी शुडंट बी लाइक दिस कि हम पहली बात कि मोटा पतला गोरा काला, दिस वी शुडंट डू. वी मस्ट बी लविंग आवर बॉडी, वी मस्ट बी एम्ब्रेसिंग इट. सेकेंड, देयर इज नो, जैसे कि हमें बॉडी को कैसे देखना चाहिए, व्हाट दीज पीपल थॉट कि body should be seen as a beautiful and immensely beautiful creation of God, as a beautiful creation of God, and it shouldn't be think कि ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, ये चीज दिखनी चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बड़े कपड़े पहनने चाहिए, and all of that, these stigmas, we shouldn't be doing like this. Rather we must be embracing our body and be looking कि wow, so beautiful we are being created. हम लोग कितना खूबसूरत लग रहे हैं. This is how we must accept everything, right? So humans क्या बन गए? Center बन गए study का. The secular themes and depiction of human forms became the focus of painting and sculptures also. आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप कभी you get the मौका to visit Italy, you will find कि इटली या रोम में आप देखोगे कि यहाँ पर you will find many sculptures of completely naked person, because not कि वो कुछ भी ऐसा कि कुछ गलत पोर्ट्रे कर रहा है, बल्कि they are telling us that look how beautiful this body is made. Now I will show you one picture. The Michelangelo, you must have heard of Michelangelo. आप सभी ने Michelangelo का नाम सुना होगा, okay? Now he created this sculpture David. This is a bare body structure जिसमें आप देख सकते हैं उसके पूरे calves, muscle, even the bones and the collarbones, all the things are seen so beautifully, and this shows the beautiful depiction of a male body. Right, now we have Pieta, that is also created by Michelangelo, where Mary is carrying the dead body of Jesus Christ. Now you can see, अगर आप focus करोगे इस depiction में, क्या इसमें beautiful है कि यहाँ पर कितना brilliantly उसके calves को, उसकी हड्डियों को भी उन्होंने sculpt किया है. This is a work of fine sculpture. Right, moving on, the true spirit of Renaissance was represented by who were the flag bearer. कौन थे जिन्होंने बहुत true spirit Renaissance का दिखाया इस time पर? These were the sculptors, the painters, the writers, and the scientists. Some of the examples are like Michelangelo, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton. You all must have heard all these names. आप लोगों को पता है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, ये लोग अपने आर्ट के लिए फेमस हैं. विलियम शेक्सपियर, आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर, you are in ICSE board, now you will read William Shakespeare in higher classes. Okay, so that is William Shakespeare. Nicholas Copernicus, we have scientists Galileo Galilei, Isaac Newton. So इन लोगों ने क्या किया? रेनेसांस की थिंकिंग को और आगे बढ़ाया. I would like to say hi to Sneha Das. Thank you so much for joining in. Now लियोनार्डो दा विंची की दो बहुत फेमस पीस मैं आपको दिखा रही हूँ. That is, one is the painting of Mona Lisa. You all have heard the painting, or about the painting, or you must have seen the painting of Mona Lisa. So ये Mona Lisa की painting है. Moving on, we also had Madonna of the Rocks.
दिस पेंटिंग। ना ये सारी पेंटिंग्स कैसी दिखती हैं, ये सारे स्कल्पचर्स कैसे दिखते हैं कि जैसे कि इसमें जान हो, राइट? जैसे कि these paintings are will speak up in a moment, right? So this is the beauty of the creation of during this time. ये हमारा रेनेसांस हो गया। रेनेसांस में हम लोगों ने क्या समझा? दे वर द पीपल जो रीजन से बात कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, रीजन आउट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट जस्ट बिलीविंग ऑन वट एवर द चर्च सेज। एंड this was the time when brilliant art, architecture, philosophies and sciences developed. Now there are several sculptors, painters, writers and scientists who came in, like the famous Michelangelo, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Galileo Galilei, Copernicus, and all of that. These were the famous people जो इस टाइम पर आते हैं. I hope you have understood this. Now we come on to our last topic, that is Reformation. Okay, Reformation was also a very important movement. ये भी एक बहुत important movement था यूरोप में, जो कि 16th century में हुआ. ठीक है, आप क्या देखोगे कि रेनेसांस ने क्या किया, एक रास्ता बना दिया. It paved the path for the Reformation, the next movement to follow. Renaissance paved the path for the next movement to follow, right? So in the 16th century, new spirits of inquiry, अब क्या है, लोगों में जोश है. रेनेसांस कब आया था हमारे बीच में? 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में, 14 to 17th century, right? Now in the Reformation came in the 16th century. इस टाइम पे okay, so Chandan has a beautiful, interesting question to ask. So Chandan Kumar Singh said, "Ma'am, I have a coin of 1974 of America, 1 cent. Okay, ma'am, what I do of the coin? Please preserve that coin. That is an antique coin that you have. You must always keep it. As a historian, you are exploring history and you must keep it, because first, that's a very valuable coin. वो एक valuable coin है. 100 years में उसका value will be so much high. First thing, and second thing, that is a thing that you must preserve. अभी मैंने आपको archive पढ़ाया ना, archive and museums. So archive में हम लोग क्या करते हैं, documents को preserve करते हैं. Museum, so you must go ahead and keep that as a token कि आप लोगों को दिखा सकते हो कि see, I have an American coin of 1 cent that belonged to 1974. Right? Now, moving ahead. Now, this new spirit of inquiry जो Renaissance से इस टाइम पर आती है, opposed the practices of the Roman Catholic Church. Now, this opposed the practices of the Roman Catholic Church. अब लोग क्या कर रहे थे Renaissance के टाइम पर? लोग क्या करने लगे? लोग तर्क करने लगे, लोग सवाल उठाने लगे. Okay. Okay. So वो लोग क्या करने लगे? वो लोग सवाल उठाने लगे. Now इसी सवाल उठाने में उन्होंने अपोज किया, वो लोग completely खिलाफ खड़े हो गए. They stood in opposition to the practices of the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church के opposition में वो खड़े हो जाते हैं. Okay, now they question the special position enjoyed by the Roman Catholic Church in the Christian world. उन्होंने किस चीज पे सवाल उठाया? उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों रोमन कैथलिक चर्च को, कैथलिक में आई मैंने लिख दिया है, सॉरी यहाँ पर आई होगा, ओ लिख दिया था. सो उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों रोमन कैथलिक चर्च को एक इतना स्पेशल पोजीशन मिलता है. Okay, and so they spoke that they are getting richer, powerful, and also corrupt. Okay, so some people spoke against the church. उन्होंने चर्च के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया. They opposed and stood against. They were speaking against the church, and they believed that it had became. उनका मानना था कि चर्च क्या हो चुका है? वो बहुत रिच हो गया है, पावरफुल हो गया है और बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है.
Now these people were called as the Protestants. So जो लोग, the people who stood against the church, or who opposed the churches, the Catholic churches, and they said that the churches had become too rich, powerful and corrupt, were known as Protestants. अगर मैं आपसे पूछ दूं, if your school teacher asks you what is a Protestant or who are Protestants, so you can write people who oppose the church. जिन्होंने क्या किया था, पहला पॉइंट, opposed the church, उन्होंने क्या किया था, चर्च को अपोज किया था. So they opposed the church, and what they thought, that the church has became, उनका क्या मानना था कि church has became, क्या बन गया है, too rich, it has become too rich, powerful and also very corrupt. ठीक है, करप्शन आ गई है चर्चेस में. They were known as the Protestant. Moving ahead, Reformation attacked the practice of blind faith. अंधा विश्वास का जो फेथ, किसी भी चीज पे अंधा विश्वास होना, उस चीजों पर, उस प्रैक्टिसेस पे इसने अटैक किया. Reformation asked the people not blindly accept whatever the church told them. उन्होंने भी यही कहा जो रेनेसांस के लोगों ने कहा था कि हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए blindly जो हमें चर्च कहती है. They asked the people to read Bible. उन्होंने क्या बोला कि हमें चर्च पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद से बाइबल पढ़नी चाहिए. We must read Bible and follow its teaching, and we must follow the teachings of Bible, because these people were the one who regarded Bible as the supreme authority. कि उनका मानना था कि बाइबल क्या है, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, and not the popes of the church. पोप ऑफ द चर्च नहीं, गॉड और ह्यूमन. समझिए इस बात को, गॉड और ह्यूमन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, rather than having a pope in between. हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, पोप नहीं होना चाहिए. I would like to say hi to Rashmi Sinha. Thank you so much, Rashmi, for joining in. Now, okay, Rashmi Sinha. So your name is Varnika. Thank you so much, Varnika, for joining in. I'm so happy that we have you in our class. Moving ahead, the Protestant against the corrupt practices. जो corrupt practices church कर रहा था या church के officials कर रहे थे, उसके against इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया. वो लोग निकल गए कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके अगेंस्ट हमें आवाज उठानी चाहिए. So they raised their voice, they protested against the corrupt practice of the churches, and this was led by Martin Luther. With कौन इसे आगे ले जा रहा था, मार्टिन लूथर. नाउ मार्टिन लूथर was a monk in Germany. ये कौन था मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर was this person जो एक मॉन्क थे जर्मनी के. मूविंग ऑन, देयर वर अदर पर्सन आल्सो जिन्होंने इस पर्टिकुलर रेफॉर्मेशन को आगे ले जाते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में वी हैड उरीच ज्विगली. दिस पर्सन उरीच ज्विगली एंड जॉन कैल्विन, they popularized the Protestant movement where in Switzerland, and in England the movement was led by Henry VIII. हेनरी VIII ने ये मूवमेंट को किया था, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया इंग्लैंड में. Now in response of the Protestant movement, इस Protestant movement के खिलाफ रोमन कैथोलिक चर्च भी एक मूवमेंट बिगैन करती है. रोमन कैथोलिक चर्च भी क्या करती है, एक मूवमेंट को बिगेन करती है, टू रीस्टोर द रेप्यूटेशन एंड द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द चर्च. क्रेडिबिलिटी ऑफ द चर्च, कि वो अपना रेप्यूटेशन वापस ले पाए, वो जो उनकी खो रही थी इज्जत, वो वापस वो लेकर आए. एंड द क्रेडिबिलिटी, कि वो उनको लोग क्या कर रहे थे, अंधा विश्वास करके उनको लैंड्स दे रहे थे, वो लोग टैक्स ले सकते थे पीपल से. सो उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही थी बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. सो व्हाट डिड द चर्च डू, दे आल्सो ब्रिंग इन अ रिवोल्यूशन दैट वाज नोन एज द कैथोलिक रिफॉर्मेशन. Okay, in order to restore the reputation and credibility of the church.
Understood? Now, this division between the Protestants and the Catholics, ये क्या था, और उनके religious disputes. अब आप लोग समझ सकते हो कि the Christian religion is divided into two groups. One is led by the Protestants and the other is the Catholic group. है ना, वन इज लेड बाय द प्रोटेस्टेंट्स एंड द अदर इज द कैथलिक ग्रुप. सो ये जो डिवीजन था और जो उनके रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे, धार्मिक मतभेद जो थे, धार्मिक रिलीजियस डिस्प्यूट्स मतलब मतभेद होना, उनके बीच में एक समान वो लोग नहीं सोच पा रहे, वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट सोच रहे हैं. दिस कंटिन्यूड टू द 17th सेंचुरी. 16वीं शताब्दी से ये रिफॉर्मेशन शुरू होता है और ये डिस्प्यूट चला आता है 17th सेंचुरी तक. ना जो लोग इस डिस्प्यूट से थक चुके थे, दे वर टायर्ड ऑफ सीइंग सच अ डिस्प्यूट्स, दे लेफ्ट यूरोप. उन्होंने यूरोप छोड़ दिया एंड दे एंजॉयड रिलीजियस फ्रीडम इन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिकास. और वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर उन्होंने फ्रीली अपने रिलीजन को अपनाया, जो भी रिलीजन और जो भी चीजें वो करना चाहते हैं. सो इस डिस्प्यूट से हार कर बहुत लोग यूरोप को छोड़ देते हैं एंड दे माइग्रेटेड टू अमेरिका. नाउ विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ माय सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड पेशेंट that you have been throughout my entire session. Now, if you have any question, you can post me, you can write down the questions and I will be entertaining that. Thank you so much for joining in. I'm so glad that I have people like you in with us. Okay, now I would be saying what कि आप लोगों को दो चीज मैं याद दिला दूं. पहला, आप हमेशा कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे अपडेट्स आए. दूसरा, इफ यू लाइक माय टीचिंग, राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन लाइक माय वीडियोस आल्सो, या फिर आप कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो कि यस मैम आई एंजॉयड दिस पार्ट और दैट पार्ट, या फिर किस तरीके से आपको मेरा वीडियो हेल्प कर रहा है. Third thing is do share it if you want. अगर आपके पास 8th standard के आपके classmates, groupmates हैं, so do share this with your 8th class people ताकि उन्हें भी benefit हो पाए इस channel का. The more the channel will grow, the more contents you will have on this platform. जितना ज़्यादा channel बढ़ेगा उतनी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ पाऊंगी. जैसे मैंने अभी आपको chapter समझा रही हूँ, मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी एंड ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस जो बीच से आ सकते हैं. आई विल बी टेलिंग यू कि कितना कैसे क्वेश्चंस बीच से आ सकते हैं. सो क्वेश्चंस फ्रॉम इन बिटवीन ऑल्सो प्लस द एक्सरसाइजेस एंड आई विल बी ऑल्सो डूइंग सैंपल पेपर्स. कैसा क्वेश्चन पेपर आपका बन सकता है आईसीएससी बोर्ड में. सो मैं आपके साथ सैंपल पेपर भी करूंगी. थैंक यू सो मच किस्मत कुमारी, अर्पणा वर्मा, चंदन कुमार सिंह, विनीता तिवारी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर appreciating my effort. Now you have been an extremely nice and wise people. So now I will be ending up my session. We will stay connected through this platform only, through this platform, and I will come next and I will update you about that. ठीक है, so इसी टाइम पर कल फिर मिलते हैं फिर आगे के सेशन के साथ. Thank you so much for joining in.